Yeah, good morning, all of you. Hello, good morning. Good morning, sir. Yeah. Students are still joining. Still, the students are joining. Only 15, 16 students so far. Umang, can you please check? Please ask them to join. Sir, some students are waiting in the lobby. I am audible, no, properly. Yes, sir. I'll wait for 2 minutes. Is this screen visible, Umang? Yes, sir. Yeah. So we were discussing about the center of pressure. The center of pressure is same as your center of gravity. I am audible, no, properly. So this notes I have already uploaded.
in the classroom, and this has been taken from production processes to technical publications, and author is Anup Goel. So you check up in the bookshop because the e-copy is not available. So this book is useful from examination point of view. Now this is a component, and this is what is going to be your fourth assignment, that is progressive die design. Now the question here is, for this particular component you have to design a strip layout and percentage utilization, center of pressure and press capacity. Okay, so let us see one by one. Hello, now who can tell me the dimensions? Hasnan, are you there? Hello. Hello, Hasnan, are you there? No. Okay, Umang. Hello. Yes, sir. Can you read the dimensions of this component? This diagram, figure 4.53. Sir, 40 by 30. Read loudly. Read each and every dimension. Sir, vertical height is 40. Then Sir, go this. go clockwise. Okay, sir. So vertical height is 40. So this Speak small. loudly. So vertical height is 40. Huh. This small diamond distance is 10. No, just go on reading. 40. Then so you can you see my cursor? How much is this dimension? 10, sir. Then 20, 10, this is radius 5, radius radius 5. pi. Normally, actually, we don't give like radius pi and radius 10. This is a wrong, dimensioning. We have to give the diameter. Nobody gives like this radius pi. So here we have to say dia 10. This is dia 10. Okay, and this is radius 10. This is correct because this is an radius. It's not a circle. Yes, sir. Okay, so now strip layout means, see, this is the strip. Okay, strip you understand, which we feed in the press machine. Okay, now you have to place the component in such a way that there is minimum wastage. You have to place the component in such a way that there is a minimum wastage. Now where is the wastage? This side is wastage, correct? ये पूरा आपका wastage है. Are you understanding this? And this is what is going to be used. Now here there are two operations. One is blanking, that is this, and another is piercing. Okay, piercing is also called as the punching, but in order to avoid confusion I will say piercing. So piercing of this hole and blanking. So you have to do one progressive die design, that is for the two operations, namely blanking and piercing. Okay, now Umang, hello. Yes, sir. What is this written here? This सर आपका cursor. कर्सर हाँ, कर्सर नहीं दिख रहा. सॉरी, कर्सर नहीं दिख रहा है सर आपका. ये कर्सर स्क्वायर कर्सर ऐसा. हाँ सर, फीड. हाँ, feed. Okay, so what is the width of the strip here? Just tell me faster. What is the width of the strip? Figure 4.53a. What is the width? This is the strip. What is the width of the strip? सर Capital 40. H. Okay. Hello. 40. No, no, I am just asking. This capital H is the width of the strip. Okay, which is given as 40 mm. You are right. Hello. Sir, it's Hello. 43.2. Hello. Yes. Don't. Hello. You just concentrate only on figure 4.53. Don't look below. Where is my cursor? Just look at that. Hello. Capital H. Capital H is the width of the strip. That is the right answer. What is the small h? Small h is this
dimension of the component. Okay, now a, can you see this a and a, this 2a, it is the distance that you have to leave, minimum distance that you have to leave in a strip. Understand? No other, suppose if the distance is very less, if this distance is very less, then this, there will be a tear across this, there will be a tear across this. Okay, so you have to have some strength, so for that you have to maintain minimum a, then also you have to maintain minimum b. Okay, now this is for the first component, this is for the first. How is the feed? Can anybody tell me how is the feed? Is it going from this direction, that is from left to right, or whether the strip is going from right to left? Please tell me quickly. Be interactive. Sir, right to left. Ah, right to left, that is strip is going from here to here. Okay, so that's why the first strip, the first component, you will see this edge, so you have to maintain this b. Then what is the pitch? Pitch is nothing but the distance between the two components. Pitch is nothing but the distance between the two components. All right, so that is, in this case, pitch is nothing but feed. Pitch is nothing but the feed. All right, pitch is nothing but a feed. So now pitch is equal to w plus b. Pitch is equal to w plus b as per this diagram. Now let us see how to model these dimensions. So a, that is nothing but the side thickness, is given as t plus 0.015 times h, where h is the width of this component, t is the thickness of the strip. Now this has been given, t is given as 1 mm, w is given as 40 mm, that is, Umang, here you are read this, isn't it? W is given as 40 mm, and then small h is also given 40 mm. Okay, so A will be equal to 1.6 mm, that is 1 plus 0.015 into 40. Do you agree, Madhav? Hello, Madhav? Where is Madhav? ज्वाइन करके छोड़ दिया मीटिंग. Hello, Dimple, are you there? Can anybody ask Madhav to call me? Shani? Yes, sir. Yeah, please tell Madhav to respond. Madhav or Dimple. Yes. वैसा मीटिंग ज्वाइन करके किधर जाते हैं ये लोग? कॉल करो उसको. उसको बोलो सर इज वेटिंग, आइदर माधव और डिम्पल. लग रहा है फोन उठा रहा है. Yes, sir. Ringing हो रहा है. हम्म. Ringing हो रहा है सर. और ये भी नहीं, डिम्पल भी नहीं उठा रहा है क्या? विशाल. Sir. हेलो. Yes, sir. हाँ, या यू आर देयर. Okay, what happened, Shani? She is not picking up. Dimple. सर लगा रहा रो पर. Shivam. Yes, sir. हाँ, this is very bad, no? सर यस Yes. सर. अभी वो डिम्पल तो कभी क्लास में रहता ही नहीं है लेक्चर्स में. Many times I have been calling her. This is a disrespect to the teacher, no? नहीं सर, एक्चुअली आई एम राइट नाउ एट माय होम टाउन, सो राजस्थान में. सो ओवर हियर देयर इज सम नेटवर्क इशू, लाइक इट्स लाइक ऑल द टाइम, सो दैट्स व्हाई.
अच्छा शिवम, नाउ यू टेल मी योर कम बैक, नो हाउ वाज योर कंपटीशन? कितना प्राइस It was प्राइस bad, मिला sir. कि नहीं? हाँ, नहीं सर, नहीं मिला. अच्छा डोंट गेट डिसअपॉइंटेड देन। यस सर. सर एक्चुअली इंजरी हुआ मुझे इसीलिए. अच्छा क्या हो गया? हाँ. इंजरी इंजरी हुआ वो. ओ इंजरी, ओ हो, बट यू आर सेफ नो नाउ? या सर. ओके, ठीक है. सो शनि, यू अंडरस्टूड हाउ दिस ए इज कैलकुलेटेड? ए इज इक्वल टू टी प्लस 0.015 एच. Yes, sir. Now similar, now what is B? B is this distance. So B is to be taken as 1 mm. It is not calculated. Okay, this is assumed. B is equal to 1 mm. Okay, then capital H. So capital, now depending upon the width of this component, we will come to know, or we can calculate this width of the strip. All right. Yes, sir. Shani, at least you be interactive. So capital H will be equal to this H obviously plus 2 times A. So that will be 43.2. Okay. Now you have to check in the market whether this 43.2 millimeter width strip is available or not. If it is not available, because this being odd size, then if your quantity is large, like suppose if you need 5 tons or 10 tons of raw material, 5 tons or 10 tons of this strip, you can directly contact steel manufacturer like Tata Steel, Mukund Iron and Steels, Jindal. These are the steel manufacturers. So if the quantity is large, like 10 tons and above, then you can directly contact these peoples and they can give you this width 43.2. Otherwise, if your quantity is small, then you will have to take whichever is available in the market. Okay, so now as far as my knowledge is concerned, in the market now after 40 you will get 42 and then you will get 45. Okay, so you will have to take 45 ka strip. But now here for examination purpose, this I am telling actually what will happen in practice. Practically, that is when you work in the industry, that time you may not get 43.2. So that time you don't tell, अरे राणे सर तो बोले थे कि 43.2 का strip use करो. Okay, but this I am telling in practical in the market 43.2 will not be available, but here we are assuming that it is available. Okay, now if you are using 45, so there is no harm, but the wastage will be more. Okay, now how to find out the pitch? बोलो शनि, पिच कितना है इसमें? अभी पिच कितना आएगा जरा जल्दी बोलो. व्हाट विल बी द पिच? Sir, W plus B, na? हाँ तो कितना? W plus B, so that is 41. 40 plus 1. Okay, 41 mm. Now we have to find out the percentage utilization. मतलब आपका जो स्ट्रिप है वो कितना यूटिलाइज हो रहा है. So how to calculate? Now look at this carefully. I will give some time. So percentage utilization is calculated by total blank cut area divided by area of uncut strip. Area of the uncut strip. And if you want to find out in percentage, then you will have to multiply by 100. Okay, now see carefully. If you have calculator, you please check. If you have paper pen, you please write down. Actually, it's a good practice to sit with paper and pen. I have seen many students, वीडियो ऑन करता है तो कोई सोया है, कोई टेबल के ऊपर बैठा है जैसा गार्डन में बैठता है, हाँ, पेट के ऊपर मोबाइल है, ऐसा सब चालू रहता है. सो आई ओनली फील shy and I ask them to close the video. Okay, चलो भाई वीडियो बंद करो, जैसा तुमको सुनने का है वैसा सुनो, बट आई कांट सी यू इन दिस टाइप ऑफ पोजीशन. और वो स्टूडेंट भी, अभी सर बोल रहा है वीडियो ऑन, तो कम से कम थोड़ा पोजीशन अच्छा लेने का, टेबल चेयर के ऊपर बैठने का, ऐसा नहीं जैसा है वैसा ही. हाँ, बाल भी नहीं बना हुआ है. हाँ, थैंक्स दैट एटलीस्ट दे वेयर टी शर्ट्स. Sir, we have to calculate the number of components that can be fit into the entire strip and हाँ multiply हाँ, the area of हेलो, one component. वो बाद में, पहला अभी ये देखो परसेंटेज यूटिलाइजेशन देखो. ये टोटल ब्लैंक कट एरिया डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ अनकट स्ट्रिप, ये बराबर है क्या? देखो पहला ये, हैव यू अंडरस्टूड दिस? एरिया ऑफ द अनकट स्ट्रिप, फर्स्ट ये बोलो, एरिया ऑफ द अनकट स्ट्रिप, इज इट करेक्ट? फीड इनटू एच.
we are only concentrating on this portion. Uncut strip Mm, matlab ये इतना. So is it right? This distance into this distance, correct? Just concentrate no on, sir. huh? नहीं. Right, no? Feed into h, correct? No sir. नहीं बराबर, क्यों नहीं बराबर है? ये फीड है ना, ये ये डिस्टेंस. सर वो स्मॉल बी का क्या फिर? कौन सा? वो स्मॉल विल छोड़ दो, वो खाली फर्स्ट टाइम ही रहेगा जब भी फीड करेंगे ना हम लोग, राइट टू लेफ्ट. अंडरस्टैंड नो? फिर बाद ठीक में है. बाद में स्मॉल भी पिक्चर में आएगा नहीं ना. बाद में ये खाली एक एक ये जो पिच के ऊपर तुम्हारा स्ट्रिप है ना, आगे आगे जाएगा और पंचिंग, सॉरी, पियर्सिंग और ब्लैंकिंग होते रहेगा. अंडरस्टैंड? यस सर, फिर एंड इफ ठीक यू है. वांट टू कैलकुलेट दिस, तो बाद में मैं बता, पहला ये मेरे को बोलो, ये जो एरिया बराबर है कि नहीं, दिस एरिया. लुक एट माय कर्सर. Yes sir. करेक्ट नो? Feed into edge. All right. Now concentrate on the blank cut area. Blank cut area. Blank cut area. Is it right? This blank cut area, 10 into 40 plus 20 into 20. 10 into 40. How did you got this 10 into 40? That is this. Okay. 10 into 40. That is this. All right. Then ये कितना है? 20. Okay. So how do you got this now? 20 into 20. That is this rectangle. 20 और ये भी कितना रहेगा? 20 बराबर है, क्योंकि ये 40 है, -10 तो ये बचा 20. तो 20 into 20, दैट इज दिस. वी आर डिवाइडिंग दिस कॉम्पोनेंट इनटू 3 पार्ट्स. पहला ये एक रेक्टेंगल, बाद में ये दूसरा रेक्टेंगल और बाद में ये तीसरा सेमी सर्कल. बराबर है? ये पूरा ब्लैंक का एरिया निकाल रहे हैं. वी आर फाइंडिंग आउट द पूरा ब्लैंक का. और बाद में दिस इज योर सेमी सर्कल. सो सेमी सर्कल, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल? पाई आर स्क्वायर. और सेमी सर्कल का आएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2. ओके. तो इज दिस करेक्ट, शनि? यस सर, करेक्ट है. करेक्ट नो? इनटू 100%. ठीक है. सो ये अभी कितना आ रहा है? 53.38%. ठीक है. नाउ somebody was telling, I think Ashish, no? So you can find out the number of components. Actually that is the correct way. Okay. And then only you will get the strip utilization. So see, ये जो है ना, दिस बुक्स जो रहता है ना, टेक्निकल पब्लिकेशंस या निराली पब्लिकेशंस, those are not actually standard books. They are just, one author is is writing, books for all the subjects. So there is no authority. Okay. But you can very easily, instead of referring 4 books, sometimes the students find this book easy because एक ही book में सब कुछ रहता है. From examination point of view, it is better, but there has to be a teacher, guide, mentor. So अभी कैसा करने का? Now you tell me. Okay. Now suppose the strip which has come, उसका width है 43.2. Okay. And if the length of the strip is 5 meters. Okay. Or let us assume, for simplicity, let us assume the length of the strip has 1000 mm. So what will be the number of components produced? Just give me 1 minute. Sir, You length calculate. divided by feed. हाँ, तो अभी वो निकालो ना प्लीज. हाँ, मैं जरा 1 मिनट दे दो मेरे को. जस्ट गिव मी अ मिनट.
हेलो आशीष, हेलो। Yes, sir. हाँ, कितना आया कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ 24, कंपोनेंट्स? 24, 24 1000 डिवाइडेड बाय कितना किया? 41. 41। पिच कितना है तुम्हारा? सर वही ना 41 है. W प्लस बी। हाँ. 24 एग्जैक्ट 24 आया क्या? 23 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ? सर 24.4 आया है, तो 0.4 का क्या करें? हाँ, तो वी कैन नॉट कंसिडर दैट, नो, बराबर। शनि तुम्हारा कितना आया? हेलो। 24.39 सर, सेम है। हाँ, so even if it is 24.9, you have to consider number of components as 24 only. Understand? यस सर। Okay, so 24 components you have got. And then what is the so utilization कितना आया? Scrap utilization, आशीष? अभी पूरा कंसिडर करो ना एरिया ऑफ द स्ट्रिप. नाउ आई विल टेल यू हाउ टू कैलकुलेट. अभी यू हैव, hello, I hope everybody is understanding. Since these two peoples are responsive, interactive, that's why I am interacting with this. Don't feel that the sir is only discussing with Shani and Shivam and Ashish. Anybody is free, but then I keep on shouting, like Abhi Madhav, that Dimple. Okay, so now Ashish, now you find out the percentage utilization. Now, what is the total strip area? What is the width we have taken? 43.2. So, what is the area of the strip? 43.2 into 1000. Okay, और जो blank cut area है, that will be how much? ये जो total जो numerator दिख रहा है, multiplied by 24. करो अभी फटाफट. Both of you, Shani and whoever wants to do. So first, tell me the blank cut area. कितना आया आशीष? Numerator. Tell me only numerator. कर रहा है क्या मैं करूँ? सर कर रहा हूँ. 10 into 40 that is 400 plus 400 800 और ये कितना हो गया? 50 into 5 so 150 so around 950 960 तक आएगा, बराबर सर है? 957. 957 गुड. इंटू 24 आपको करना है, बराबर है ना? हाँ. अभी नीचे का देखो, अपना ये टोटल कितना आया? 43.2 इंटू 1000, तो वो कितना हो गया? 4320 0. बराबर है? अभी फाइंड आउट करो. दिस इज योर परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ द स्टेट. सर 53%. 53.17. 53.17. 17. 53.17, दैट इज करेक्ट. हाँ, अभी ये इसमें थोड़ा, बट एज एन इंजीनियर वी शुड फाइट फॉर दिस, we should get actually the accurate and correct result. So this is 53.38% and what we got is 53.13%. Okay, Shani, do you got the same answer? Did you got the same answer? Hello. यस यस सर, हाँ, same. 53.8. Okay, so now strip layout में कैसा रहता है? You have to try at least 4 options, so that I will tell in the subsequent lectures. Like एक बार आपने इसको component को ऐसा बिठाया, okay, now you have to think of some alternative arrangement also, alternative layout also. You can, now let us assume that this is horizontal, so you can keep vertical also, you can stagger also, बराबर ना? एक दूसरे के अंदर घुसा भी सकते हो. So I will show you various strip layout, how various components layout, how to and then you have to, the aim is to maximize the strip utilization. Okay, so in progressive die design, first step is you have to go for the strip layout, and considering various designs you have to finalize the die. Okay, but before that you have to place these components, and for placing the component you have to always consider 4 options, minimum 4 options you have to show in strip layout design. Okay, so that I will show subsequently. Now how to find out the center of pressure? So कल भी मैंने किया था, it is same as your center of gravity.
Okay, अभी these are the elements of the component. ठीक है, so we are naming this component 1 2 3 4 5 6 7 8. There are 8 elements and this 9 also. कल मैंने एक होमवर्क बोला था, कितने जन ने किया? आशीष किया? तुम बोला था अपलोड करो सर, मैं करता हूँ करके। सर नहीं किया। फिर मेरे को भगाता है तुम लोग और बस तुम सर लोग मेरे नहीं करते। को पता नहीं था कि आज लेक्चर है, सोचा था आज करूंगा। अच्छा, आज लेक्चर है वो पता नहीं था? ऐसा कैसे? ओके, नो प्रॉब्लम. This is example 4.7. I already uploaded this. This has again and again I am telling, this has been taken from Production Processes Volume 2 by Goel, uh, which should be available in most of the stationery shops. I mean book depots, Parle में वगैरह. E-copy is not available. If you get e-copy, please forward it to me also. अभी ये देखिए, ये एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7. So element number 1, what is the length? जरा फटाफट बोलो. 40. अदरवाइज फिर मैं बोलते जाऊंगा, फिर मेरे को समझेगा नहीं तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं. देन x. So before we proceed we have to assume origin. अभी इसका center of pressure, since this is symmetrical about x axis, center of pressure will be on x axis, correct? Do you agree? On this axis, बराबर ना? It is symmetrical about x axis. Am I right? Yes sir. So you don't have to take y distance, so you will have to consider only x distance. बराबर है? तो this is the table. उसमें आपका y will not be there and L into y, that will also not be there. Okay, so 2 columns. So this is symmetrical component will be always easy and simple. So 2 columns will go. Yes or no? पूरा yes yes बोलो ना. Yes sir. हाँ please. हाँ, thank you so much. So now this x is nothing but it is the center of gravity of element 1 with respect to the origin. Now origin we are taking where? Can anybody tell me where is the origin of this, which is not shown? And you have to show the origin, otherwise I will not accept the design. अभी इसमें मालूम नहीं पड़ता Sir है bottom कहाँ. left corner. Very good. Huh? So it is taken over here. Can you see my cursor? This cursor. So the origin is here and you have to show by circle. Thick circle से दिखाना है आपको. Okay, origin. और you can write also arrow करके वहाँ पे लिखने का भी origin करके. Now with respect to this, इसका this is on the origin itself. So x distance will be 0. Okay, now this is Lx मतलब L into x. So 40 into 0, that is 0. All right. Now element number 2. अभी इसका center of gravity कहाँ पे रहेगा? इसका half. Okay, so ये 10 है. All right, I hope you can see this. This is 10. So 10 का half, that is 5. So 5 from this in horizontal direction. All right. So length is 10 and x is the distance of center of gravity of this from this origin. So that is 5 and L into x is 50. Is this clear? This row is clear? Hello? Shani? Yes, yes, sir. हाँ. Now element number 3, that is vertical. Okay. तो इसका लेंथ कितना है? 10. ओके, अभी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे रहेगा? ये लाइन पे रहेगा, बराबर है? ओके, यहाँ पे. Yes, sir. हाफ ऑफ दिस. सो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस ओरिजिन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट विल बी ऑब्वियसली 10. एग्री और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. 10. So 10 into 10, that is 100. Okay. Now element number 4. तो इसका बोलो x कितना रहेगा? फटाफट बोलो. x. What will be the x distance? That is distance of center of gravity from this in horizontal direction. बोलो भाई. Hello. हाँ बोलो. Yes, sir. It will be शनि 20. है मास. हाँ 20 ना sir? हाँ 20 कैसा आया? अभी देखो इसका लेंथ कितना है? 20. तो उसका हाफ, that is Half और 10. वो और 10. ये 10. So 10 plus 10, 20. Okay.
सो एलिमेंट नंबर 4. अभी एलिमेंट नंबर 5, आशीष, सेमी सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे रहता है? व्हाट इज द फॉर्मूला? सर 3 बाय फ्रॉम बेस ऐसा कुछ तो है बराबर बोलो ना ठीक से. सर. 3 π/4 फ्रॉम द डायमीटर ऑन द रेडियस. 3 π/4. I am सर डाउट afraid. पक्का नहीं है. I am afraid it is not correct. I am afraid it is not correct. 0.79 into R ऐसा कुछ था ना. 0. हाँ हाँ 7 0.79 into R. into R. Yeah, हाँ. that is right. Okay. अभी गूगल किया क्या? याद था ये सब? तुम्हारा याद था. टेक्निकल एग्जाम होता है ना सर प्लेसमेंट 2r में बाय तब. बाय. हाँ, तो द मोर करेक्ट इज 2r/π. ओके. सो अभी एलिमेंट नंबर 5 देखो, एलिमेंट नंबर 5. ठीक है, अभी इसका लेंथ निकालिए, कितना आएगा? हाफ द पेरीमीटर, बराबर है. सो पाई इंटू आर, बराबर है. सो पाई इज 3.14 इंटू रेडियस इज 10. सो दैट विल बी 31.4. So that is this length 31.4. Did you understood how did you got this 31.4? Length of this element number 5, which is nothing but a semicircle. सर्कल का पेरीमीटर पाई आर रहता है. क्या 2πr रहता है? सर 2πr रहता है. हाँ, तो सेमी सर्कल का पाई इंटू आर हो गया, बराबर है. सो पाई इंटू व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस आर्क? इट इज 10. सो 5 इंटू 10, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 10, सो 31.4. So is the length correct? Element number 5. हेलो. यस सर. हाँ, अभी इसका डिस्टेंस. सो फॉर्म नाउ यू हैव टू बी केयरफुल. ओके, फॉर्म दिस लाइन. See, this is the semicircle. इसका center is lying on this line. So from this line, it will be at a distance of 2r/π. From this line, 2r/π. It is not from this end. आशीष, ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर रहता है? फ्रॉम द बेस. वो भी भूल गया. हाँ सर भूल गया. हाँ ठीक है, Sir, चलो. where the medians join. हाँ, तो सर मीडियन का. h/3. हाँ, गुड. सो अभी ये जो है सेमी सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इट लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r/π फ्रॉम दिस एक्सिस. और ये कितना? दिस डिस्टेंस इज हाउ मच? 20 + 10 फ्रॉम हियर. सो दैट इज 30. सो 30 + 2r/5. So that is 1142.444. Okay. Then element number 6. So element number 6, now I will go fast. So that is 20. So similarly 7, then 8 and then 9. Okay, अभी 9 सर्कल है, तो अभी 9 के लिए क्या करने का? इट इज सब्ट्रैक्टिव, बराबर ना. ये पियर्सिंग है, तो आपको ये माइनस करना पड़ेगा. ठीक है. So what will be its length? Its length is nothing but the perimeter, that is nothing but 2πr. So इसका डबल, बराबर ना. So अभी ये -31.415 कैसा आया यहाँ पे? कैन एनीबडी टेल मी? बिकॉज दिस रेडियस इज 5 और ये रेडियस 10 था, बराबर ना. सो 2πr, सो 2 into 5, 2 into 2πr, so 2 into 5 is 10. 10π, that is nothing but 31.4. And since it is to be subtracted, so we take -31.414. Either you take this or यहाँ पे. Now what is the x? इसका center of gravity will be nothing but the center line, this. So that is at a distance of 10 + 20, 30 है. इतना तक any doubt? शनि? No sir. No. So now this is L into x minus. अभी क्या करने का आपको? इसका सबका समेशन करना है, समेशन ऑफ L. इसका नहीं करना है. Then you have to do summation of Lx. Summation of Lx, ये कॉलम का समेशन करना है. And now you have to find out x bar. So x bar is 10.833. मतलब ये सारे का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, that is at a distance of 10.833 from this. So 10.833 means it will come somewhere here and it will lie on this line because it is symmetrical. Okay, so center of pressure आपको मिल गया.
So center of pressure is 10.833 comma 20 because our origin is here. So from यहाँ पे 20 and from that is in y direction and in x direction 10.833. Now let us find out the press capacity. Okay. So how to find out the press capacity? आशीष, how to find out the press capacity? कल मैंने बोला सिखाया था. Sir, perimeter into thickness into ultimate shear strength. First you have to find out the forces. Okay, now in this particular component, what are the forces? Sir, blanking and punching. Blanking and say piercing, blanking force and piercing force. Okay, so Yes. what will be the blanking force? Sheared area, that is nothing but the perimeter into thickness into ultimate shear strength. Now ultimate shear strength in this particular example is 200 Newton per millimeter square. ठीक है. Okay. हाँ. सो अभी ये यहाँ पे देखो, इधर कुछ मिस्टेक है, मेरे को लग रहा है मिस्टेक है करके. हाँ सर, पंचिंग का कंसीडर नहीं किया. हाँ सर, पियर्सिंग कंसीडर नहीं किया वहाँ. हाँ. सो यहाँ पे क्या किया है, ब्लैंकिंग फोर्स नहीं लिया है. ठीक है. सो यू हैव टू ऑल्सो टेक, सो यू हैव टू फाइंड आउट सेपरेटली. बराबर है. यू हैव टू नहीं फाइंड सर, आउट. लिया है लेकिन वो है ना, वो ब्रैकेट के अंदर ही हो गया. देखो ब्रैकेट के अंदर ही किया है. दैट इज व्हाट आई वाज टू टेल. हाँ. सो ये 20 10 10 20 बराबर है. हाँ. हेलो. हाँ सर, वहां तक बराबर है. बराबर है. और ये क्या है तुम्हारा, पाई इंटू 10/2 और 5 पाई. सर 5 पाए तो मेरा वो अंदर का सर्कल का पेरीमीटर. एग्जैक्टली. हाँ, पेरीमीटर बराबर है. और ये जो है वो बाहर का जो 10 का है उसका बराबर है, πr/2. ठीक है. सो कंफ्यूजन इधर क्यों है, क्योंकि दोनों ने एक साथ लिया, कॉमन लिया. एज्यूमिंग दैट यू आर इनटू थर्ड ईयर, सो यू आर गुड इन बेसिक मैथ्स. लेकिन इट इज गुड टू शो, पहला ब्लैंकिंग फोर्स निकालिए, बाद में पियर्सिंग फोर्स निकालिए. ठीक है. एंड देन यू फाइंड आउट, दोनों को ऐड करके फिर यू फाइंड आउट द प्रेस कैपेसिटी. ऑलराइट. सो दिस इनटू थिकनेस, दैट इज 1 इनटू अल्टीमेट shear strain. फाइन. अभी ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है बोलो. आशीष, शनी, शिवम. शिवम तू आहेस का बाबा. हो आहे सर. हा. ह्या 2 ने कशाला मल्टीप्लाय केलं, वाय इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2. आशीष. सर प्रोग्रेसिव डाय रहेगा. हाँ, प्रोग्रेसिव है. यू आर 50% राइट. नाउ हियर एट अ टाइम वी एज्यूम दैट देर आर 2 ऑपरेशंस गोइंग ऑन. करेक्ट नो. देयर विल बी 2 स्टेशंस नो. ये जो डाई रहेगा उसमें एक, जब भी पहला ही जब भी आएगा ना, जब भी फर्स्ट टाइम जब भी आएगा स्ट्रिप, तभी ब्लैंकिंग होएगा. बराबर है. वो आगे जाएगा, बाद में सेकंड स्ट्रोक, जो सेकंड स्ट्रोक है उसमें क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेशन में ब्लैंकिंग होएगा और सेकंड स्टेशन में आपका पंचिंग होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग. नहीं सर, पहले में सर पंचिंग होगा, सेकंड में ब्लैंकिंग होगा. कैसा भी कर सकते हैं हम लोग. हाँ, बट प्रिफरेबली पहला अपन पियर्सिंग करेंगे, क्योंकि उसका एडवांटेज क्या रहेगा, वंस यू पियर्स दैट होल, देन उसको हम सर लोग उसको हम लोकेशन के लिए स्टॉप में यूज कर सकते हैं. सॉरी, ब्लैंकिंग में सर वो लोकेशन के लिए यूज कर सकते हैं उसको. करेक्ट करेक्ट. that's what I am telling कि first you are right, what you said is correct. first पहला हम लोग पियर्सिंग करेंगे और बाद में उसको लोकेट करके ब्लैंकिंग करेंगे. लेकिन व्हाट आई एम टेलिंग, जब भी फर्स्ट स्ट्रोक रहेगा, वेरी फर्स्ट स्ट्रोक फ्रेश, दैट टाइम आर यू गोइंग टू गेट द कंपोनेंट? नो, दैट विल बी अ वेस्ट कंपोनेंट. बराबर ना, क्योंकि जो फर्स्ट कंपोनेंट वो खाली पियर्सिंग ही होगा, उसमें ब्लैंकिंग नहीं होएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर. हाँ. हाँ. बाद में स्ट्रिप गया, सेकंड स्ट्रोक में क्या होएगा, पहला स्टेशन में ऑलरेडी पियर्सिंग हो गया. बराबर है. वो वेस्ट हो गया, वो आगे गया. बाद में जब भी सेकंड स्ट्रोक होगा तभी क्या होएगा, ब्लैंकिंग भी होएगा और पियर्सिंग भी होएगा. बराबर है. सो दैट मीन्स एट अ टाइम आपको ब्लैंकिंग भी करना है और पियर्सिंग भी करना है साइमल्टेनियसली. डू यू एग्री? सो दैट्स व्हाई यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2. यू अंडरस्टूड? सर लेकिन एक डाउट था. हाँ बोलो. सर अगर मैंने वो दोनों अलग अलग बताया, पियर्सिंग और वो ब्लैंकिंग का टनेज, तो फिर मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा ना? नहीं ना,
नहीं नहीं, आप ब्लैंकिंग फोर्स और फॉर ईज ऑफ कन्वीनियंस यू आर फाइंडिंग आउट सेपरेटली, लेकिन जब भी प्रेस कर रहे हो प्रेस, तो प्रेस में दो स्टेशन है ना, तो एक ही कैसा कंडीशन करेंगे? सर लेकिन पियर्सिंग भी एक ही हो रहा है, ब्लैंकिंग भी तो एक ही हो रहा है ना मेरा। लेकिन दो अलग अलग स्टेशन पे हो रहा है ना, दो अलग अलग स्टेशन पे, इट इज नॉट कंपाउंड है। एक स्टेशन पे आपका ब्लैंकिंग हो रहा है और एक स्टेशन पे पियर्सिंग हो रहा है, तो पियर्सिंग का भी फोर्स लग रहा है और ब्लैंकिंग का भी फोर्स लग रहा है ना। सर लेकिन वो ब्लैंकिंग का जो भी टनेज रहेगा वो पंचिंग की से तो ज्यादा ही कम ही होगा, ज्यादा होगा ना, तो पंचिंग उसके अंदर ही नहीं हो पाएगा एक ही साथ में। नहीं नहीं नहीं, एडिशनल दैट इज दैट इज एन एडिशनल फोर्स ना, जो प्रेस के ऊपर आएगा वो। सर लेकिन रैम तो सर हम लोग एक ही बार में नीचे जाएगा ना रैम तो। नहीं, हम लोग कंपाउंड डाई नहीं है, दिस इज नॉट अ कंपाउंड डाई। कंपाउंड डाई में कैसा रहता है कि देर इज ओनली वन स्टेशन, रिमेंबर। यहाँ पे दो स्टेशन है, प्रेस में जो डाई है ना वहां पे दो स्टेशन है, एक स्टेशन में ब्लैंकिंग हो रहा है, दूसरा स्टेशन में पियर्सिंग हो रहा है। आर यू एबल टू इमेजिन दिस? यस सर। एक स्टेशन में आपका ब्लैंकिंग हो रहा है और दूसरा स्टेशन में आपका, नाउ इमेजिन करो कि पियर्सिंग स्टेशन नहीं है, इमेजिन करो ओनली ब्लैंकिंग हो रहा है, तो फोर्स, प्रेस को फोर्स कम लगेगा क्या ज्यादा लगेगा? ऑब्वियसली कम लगेगा। हम्म। और अभी और एक मैंने स्टेशन लगाया कि जिसमें भी अभी ये भी हो रहा है पंचिंग, तो ऑब्वियसली प्रेस के ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़ने वाला है ना, सो दैट्स वाई जितना स्टेशन रहेगा, कभी 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 प्रोग्रेसिव टाइम में 3 स्टेशन 4 स्टेशन ऐसा रहता है, तो चारों स्टेशन का जो है आपको करना पड़ेगा, वो फोर्स ऐसे कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, ओके सर। सोचो, इफ यू स्टिल हैव डाउट नो आई विल क्लियर इट। ठीक है, तो ये 4.8 मैंने कल बताया है बेंडिंग का। आई थिंक मेनी स्टूडेंट्स आर कंप्लेनिंग कि वो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। सो इसका कुछ नहीं, खाली ये फॉर्मूला, इसमें जो ये लेंथ है वो पकड़ने का, सी इसका सेंटर देखने का, यू हैव टू सी वेयर द सेंटर इज, वेयर द सेंटर इज, देन यू हैव टू टेक दिस लेंथ एंड दिस लेंथ, और ये जो है बेंड वाला दैट इज फॉर द सेटबैक or it is for the bend allowance. So bend allowance is calculated using this formula, and in this alpha, that is angle, is in radian. That is what you have to consider. Then value of k, you just take it as t by 3. It depends upon the thickness, but for simplicity you just consider t by 3. Okay, it depends, again and again I am telling, it depends, this factor, this k value of constant depends upon the thickness, it also depends upon the material also, right? So you have to see the handbook and take, but since now here it is given, you assume it as k is equal to t by 3, and then you will get the डेवलप लेंथ। तो इसका जो डेवलप लेंथ है वो साइज का आपको ब्लैंक पहला कट करना पड़ेगा, देन यू हैव टू टेक इट टू द प्रेस वेयर द बेंडिंग डाई इज फिक्स्ड और अटैच, और वहां पे आपको बेंडिंग करना है। ठीक है, फाइंड द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ द दिस, ये सेंटर ऑफ प्रेशर आपको निकालना है इसका। तो अगेन सेम, नाउ दिस इज अनसिमेट्रिकल, बराबर है, दिस इज अनसिमेट्रिकल। तो यहाँ पे अभी ओरिजिन इधर ली है, ठीक है, ओरिजिन हैज बीन टेकन हियर। एम आई राइट आशीष? कहाँ पे लिया ओरिजिन? सर फिगर दिखाओ ना। हाँ, 1 मिनट, एलिमेंट नंबर 4 देख रहा हूँ मैं। हाँ, ये सर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे दिया है। यहाँ पे टॉप लेफ्ट। हाँ, सो एलिमेंट नंबर 4 का वाई बार कहाँ पे आएगा? व्हाट विल बी द वाई बार फॉर एलिमेंट नंबर 4? एनीवन कैन आंसर? फॉर एलिमेंट नंबर 4, दिस, लुक एट माई कर्सर, दिस इज द एलिमेंट नंबर 4। इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा, इट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ हाफ ऑफ दिस, एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू दिस व्हाट विल बी द डायमेंशन? 1.25 प्लस 7.5 divided by 2. So 7.5 divided by 2 will be how much? 3.75 plus 1.25. So that will be how 5. बराबर ना? यस सर। Okay. Now in this particular example, he has considered this dimension as positive. Okay. So इसके लिए उसका सेंटर ऑफ प्रेशर जो आएगा ना, y बार जो आएगा ना, वो भी पॉजिटिव आएगा, 2.625।
इन अवर कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2.625 मतलब ऊपर जाना मांगता है, बराबर ना, यहाँ से ऊपर. बट नाउ हियर इन दिस एग्जांपल ही हैज टेकन, यहाँ पे जो राइट डायमेंशन ही हैज टेकन एज पॉजिटिव and this dimension he has taken as positive. It is up to you, you can consider this as negative. Fine, बराबर है आशीष? यस. So you got this center of pressure here. ठीक है, this since this was not symmetrical, you will get x bar and y bar. Then ये जो है drawing का I will take later on how to, for because whenever you are doing drawing the cup, हाँ, तो आपको पहला उसका ब्लैंक चाहिए, बराबर ना, ब्लैंक, एंड देन ओनली यू कैन ड्रॉ, बराबर ना. तो हाउ टू कैलकुलेट, जैसा कि अभी बेंडिंग के लिए हम लोग ब्लैंक डायमीटर, ब्लैंक का लेंथ निकाला, वैसा ही फॉर ड्राइंग ऑल्सो यू हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ द ब्लैंक. सो डायमेंशन ऑफ द ब्लैंक इज गिवन बाय दिस, then number of draws and drawing pressure and press capacity. So this we will study when we will do the drawing. This is what is called the strip layout. Okay. So in this only you percentage utilization you have to calculate for the entire strip, and you can consider by default the length of the strip as 1000 millimeter. Length of the strip as 1000 millimeter, and the width of the strip you can take it like this. This is again an example on drawing that we'll see later. This is again a drawing. Drawing में there is no die, no drawing die design or no bending die design, ओनली प्रोग्रेसिव डाई. और प्रोग्रेसिव डाई में आपको मिनिमम 2 स्टेशंस दिखाना है, ब्लैंकिंग और पियर्सिंग. एंड इफ यू ऐड वांट टू ऐड सम मोर, no problem, you can take your component also, and you can now start working on the strip layout, right? Let me see, there was some more dimensions. हाँ, कल का वो ब्लैंकिंग का और इसका कुछ इश्यू है, हाउ टू कैलकुलेट द ब्लैंकिंग में, हाउ टू कैलकुलेट द टूल डायमेंशन. एनी इश्यू यू हैव, प्लीज टेल मी. आशीष? नो सर. हाँ, सो शनि, हाँ, नाउ यू टेल मी. ठीक है, नाउ सपोज इफ द ब्लैंक डायमीटर इज 20. हेलो शनि, आर यू देयर? शिवम, आर यू देयर? यस सर. हाँ, नाउ if the blank diameter is 20, thickness of the strip is 2 mm, the clearance is 5% of the thickness, then what will be the blanking का die size and what will be the blanking का punch size? शनि, शिवम? या वेट सर. Yeah. So first you find out the clearance. What is the clearance? 5% of the thickness. So clearance, how much you got the clearance? Hurry up. How much you got the clearance?
हेलो, क्लियरेंस कितना आया? हेलो शिवम, आशीष, आर Yes, यू देयर? yes sir. लेकिन हाँ, मैं हाउ शिवम मच? कैसे कर रहा था? हाँ, क्लियरेंस, हाउ मच यू गॉट द क्लियरेंस? 0.1. हाँ, it is Shivam, what happened? Sir, I was doing it. अरे 5% of the thickness, no? So thickness is 2 mm. So 5 upon 100 into 2, 5 into 2 is 10, 10 upon 100, 0.1. Okay. Now what will be the blanking ka die size? The blank size is 20, 20 die. So what will be the blanking die size? 20. Ashish, 20. Correct or wrong? And what will be the punch size? So die size minus 2 into clearance. Huh. 19.8. So what will be the punch size? 19.8. 8. And what will be the, so you have to write like this. They give the question, calculate the tool dimension. So tool dimension में blanking die size will be 20 is equal to 20. Blanking punch size is equal to 19.8. Okay. Now consider this is a piercing, that is 20 die ka piercing you are doing. Okay, 20 die piercing. Same everything. Okay, so you have to write like this: piercing punch size. What will be the piercing punch size? Shivam, Punch size will be 20 sir. 20.0. And what will be the piercing die size? Sir plus clearance 19.8. into 2. Sorry, hello. What will be the piercing die size? 20.2. 20.2. Who was telling Shivam 19.8 कसा असेल? 19.8 मध्ये तुझा हा पंच घुसणार कसा 20चा? हाँ सर. ऍड करावा लागेल ना. Okay, if you want you write down this. Okay, simple example. So now suppose this is a hole, 20 dia ka hole. So piercing punch size will be 20 and piercing die size is equal to 20.2. Okay, so I have covered up numericals on strip layout. I'll still take some more examples. Bending ka, and these are the components which you will be taking for your progressive die design. Okay, so again there are many components: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Is this screen visible? 7, 8, 9, 10. So Yes again sir, this will it be is. divided into groups. दिख रहा है ना ये? हाँ सर. So this will be for the progressive die design. All right, ये जो component है. And then I was talking about strip layout. So let me see I have that or not. Just hold on for a minute. Still design कहाँ पे गया? Progressive die. See, this is how you have to give the options like this. This is one option, then this is another options, right? तो चार ऑप्शन है, ऐसा लिया, मतलब एक बार ऐसा लेंथ लिया और एक बार ऐसा लेंथ लिया 1000 हाँ फॉर दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट एंड फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन अगेन, मतलब स्ट्रिप को हम लोग घुमा भी सकते हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ components and what will be the utilization, and based on that you have to you have to consider the layout and then only you have to proceed for the die design. हाँ, so और देखता हूँ कुछ है क्या टीडी नोट्स में, इसमें नहीं. I have one, just hold on. Press tool. I'll show you tomorrow. Just remind me to show the press tool, how the Yeah press sir. tool will be. Yeah. See, like this you can have configuration like this.
You can have configuration like this. You can have like this configuration. You can have like this also, like this. You can have like this, and you can have like this also. ठीक है? So I will show you tomorrow. कल लेक्चर है क्या परसों लेक्चर है अभी? कल कुछ फ्री लेक्चर है मॉर्निंग में? शिवम, डू यू हैव फ्री लेक्चर इन द मॉर्निंग? हरी अप, इस टाइम अपना No, sir. All lectures are packed, sir. मॉर्निंग 9 o'clock वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे रहता है ना Yeah, sir. तुम्हारा? No, फ्राइडे को morning भी Deepali ma'am is going to take the lecture. मतलब दीपाली मैडम इज टेकिंग. ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, सॉरी टू एक्सटेंड. हाँ, Okay. Thank you, sir. क्लोज करेंगे, स्टॉप. Yeah, sir.